लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचार तो आप तक लाएंगे ही, साथ ही उन समाचारों पर स्टूडियो में आमंत्रित अपने विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास भी जाएंगे और जानेंगे वहां की चुनावी माहौल के बारे में। आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय राउत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। The headlines: ECI directs clear identification of printers, publishers on poll-related hoardings. Election Commission announces fresh polling schedule for Baitul Lok Sabha constituency in Madhya Pradesh. Voting to be held in the third phase on the 7th of May. BJP releases another list of 9 candidates for Lok Sabha polls. Congress also releases list of 6 candidates for Andhra Pradesh Lok Sabha polls. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses rally in Vellore, Tamil Nadu. DMK leader and Chief Minister M.K. Stalin interacts with people in Theni to garner votes for the Indy Alliance. निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी होर्डिंग्स पर मुद्रकों और प्रकाशकों की स्पष्ट पहचान अंकित करने के निर्देश दिए। आयोग ने मध्य प्रदेश में बैतूल लोकसभा क्षेत्र के लिए नए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की। 7 मई को तीसरे चरण में डाले जाएंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वेल्लोर में जनसभा की। डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तेनी में किया जनसंपर्क। The Election Commission has directed all states and union territories mandating the clear identification of printers and publishers on printed election-related material to ensure accountability and transparency in poll campaigning. The Commission decided after representations were received stating that in hoarding spaces controlled by municipal authorities, hoardings without the identity of the printer or publisher have been noticed. It said the Representation of People Act prohibits the printing or publishing of election pamphlets, posters, placards or banners without prominently displaying the name and address of the printer and publisher. The Commission said this requirement of disclosing the identity of publishers serves as a cornerstone for regulating campaign financing and fixing responsibility in case content is found unbecoming of the framework of the Model Code of Conduct. All political advertisements will be displayed only after certification and approval of the designated authority responsible for approving advertisements. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बारे में मिली शिकायतों के निपटारे में नागालैंड ने पहला, गुजरात ने दूसरा और महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान हासिल किया है। आयोग को वेबसाइट के माध्यम से नागालैंड से 18, गुजरात से 7,124 और महाराष्ट्र से 14,753 शिकायतें प्राप्त हुईं। महाराष्ट्र ने 98% शिकायतों का निपटारा किया। इनमें ज्यादातर मामले चुनाव मतदान पहचान पत्र न मिलना, मतदाता पहचान पत्र में बदलाव की प्रक्रिया में देरी, नई मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन खारिज होना और मतदाता सूची में नाम न मिलना जैसे मुद्दे रहे। The Election Commission has announced a fresh polling schedule for Baitul Lok Sabha constituency in Madhya Pradesh. The polling, which was to be held in the second phase on the 26th of April, will now be held in the third phase on the 7th of May. The election in Baitul was adjourned following the death of Bahujan Samaj Party candidate Ashok Bhalavi on the 9th of April. भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 9 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को बलिया से टिकट दिया है, जबकि नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद और जयवीर सिंह ठाकुर मैनपुरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने चंडीगढ़ में संजय टंडन को और एसएस अहलूवालिया को आसनसोल लोकसभा सीट पर चुनाव में उतारा है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi has said that India is emerging as a world power today and Tamil Nadu has played a big role in this. Addressing a rally at Vellore today, Mr. Modi said Tamil Nadu has made a huge contribution in taking India forward in the space sector. He said Tamil Nadu's hard work has played a vital role in taking India forward in manufacturing. Mr. Modi said that defense corridor built in Tamil Nadu will take this state to new heights. He said in the last 10 years, NDA has prepared the foundation for a developed Bharat. Mr. Modi was addressing a public meeting in Vellore to support two NDA partners, Pattali Makkal Kachi's Dharmapuri candidate Soumya Anbumani, as well as the New Justice Party's Vellore candidate A.C. Shanmugam, who is contesting on the BJP symbol. Prime Minister said Congress gave Kachatiyu Island to Sri Lanka, which harmed the cause of Tamil Nadu's fishermen. He said several fishermen have been arrested in the last few years and NDA government is continuously working to bring them back. Prime Minister criticized the DMK for being unsympathetic to the needs of the people and indulging in several scams. Mr. Modi said the NDA government has implemented several schemes for the benefit of the people and also carried out economic reforms in a massive way to put India in a global arena. Extending greetings for Tamil New Year, he said that Vellore was the core point for the beginning of the independence struggle. He said the Namo app is available in Tamil language. DMK leader and Chief Minister M.K. Stalin was in Theni to garner votes for the India Alliance. This morning, he interacted with the people on the streets and canvassed for the candidates. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि एक और कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत की एकता की बात की है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने लोगों को बांटने का प्रयास किया है। The Chief Electoral Officer of Nagaland has served a show-cause notice to Yanthongo Paton, the star campaigner of BJP for the 2024 Lok Sabha elections in the Nagaland parliamentary constituency. The notice is related to the remarks made by Paton on April 5 at a campaign program held in Wokha for Dr. Chumben Murray, the consensus candidate for the People's Democratic Alliance PDA, representing the Nationalist Democratic Progressive Party NDPP. Paton was seen in a video inciting village functionaries such as council chairmen, gaon boras and polling agents to cast multiple votes which would interfere in the free exercise of electoral rights of the villagers. And in the studios today, as Vishal informed, that we have the former Director General of the Election Commission of India, Akshay Rautji, with us. Rautji, today, the Election Commission has laid down very stringently certain parameters mandating clear identification of printers and publishers on printed election-related material to ensure accountability and transparency in poll campaigning. How do you respond to it? This is the beauty and efficiency of election management in India, and I would consider this as the soul of free and fair poll and the continuous efforts to maintain level playing ground. Just a clarification, the law was always there. Right. Having the name of the printer and publisher on posters and pamphlets which related to election campaign was always there. But it was not specifically there in relation to hoardings. Right. So, political parties and campaigners and functionaries, smart as they are, they would like to take advantage of this and fill all the hoardings with this type of whatever publicity material they wanted to content or personality. They tried to do that. And as if to escape that clutch of pamphlets and posters. But in its wisdom, and it is a great wisdom, and it's a necessary wisdom, and it's a wisdom directed towards free and fair polls, the Commission has decided no. The hoardings as well are covered under this. If you are going to put out something, please put out who the publisher of this, who printer of this, owner of this is, so that it can be accounted also in terms of expenditure monitoring. And also if there is anything which is objectionable, you know whom to serve a notice. Right. So that's a very fair move, because these are grey areas, certain areas. In fact, most of the court judgments, if you look at in the past, they would suggest
that in areas which are vacuous or where there is nothing, no rule, no law clarity, election commission is competent during the election period to interpret, to add more substance to it with the overall objective of having a free and fair poll. Right. Well, listeners, the journey towards a pivotal change in extending the voting rights to the transgender community of India was not without enormous challenges. This story echoes the struggles and triumphs of the community. Let's listen to a report by our correspondent Arpita Chaudhary from Delhi. In the annals of India's legal history, April 2014 marked a watershed moment where the Supreme Court delivered a landmark judgment recognizing trans persons as a third gender by law. The genesis of this battle traces back to 2003 when the Madhya Pradesh High Court nullified the election of transgender Kamla Jan to the post of Mayor of Khatri. In 2004, advocate A. Rajni and transgender activist Priya Babu embarked on a journey to challenge the status quo by filing a petition in the Madras High Court, seeking voter identity cards for trans persons. Despite the challenges, justice prevailed. This landmark victory not only bestowed upon them a tangible symbol of citizenship but also heralded a shift in societal attitudes. Subsequent developments such as the inclusion of transgender needs in political manifestos and the establishment of welfare boards underscored the transformative power of inclusive policies. While many transgender candidates are contesting for elections and turning up to cast their votes, the Election Commission of India has acknowledged and is working to raise awareness and expand the scope of inclusion. As the 2024 Lok Sabha elections loom, over 48,000 transgender individuals are eligible to vote. As the transgender community continues to navigate the complexities of electoral participation, their journey serves as a poignant reminder of the resilience and determination for equality and justice in India's vibrant democracy. जी अक्षय राव जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की लोकसभा चुनावों में भागीदारी एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है और अब ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो चुनावों में भागीदारी करते हैं। 48,000 जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ट्रांसजेंडर वोटर्स इस बार अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को, जो स्ट्रगल संघर्ष रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए? और साथ ही साथ क्या अभी भी कुछ चुनौतियां ट्रांसजेंडर्स को मतदान में भागीदारी करने के लिए अभी भी कुछ देखते हैं आप? आपने जैसे कहा, ये एक लंबी संघर्ष रहा है और इस संघर्ष के नतीजे बहुत अच्छे हुए हैं। संघर्ष जारी रहेगा लेकिन नतीजे अच्छे आते ही रहेंगे। आपकी संवाददाता की जो रिपोर्ट है बहुत अच्छा था, कॉम्प्रिहेंसिव था। और अब अगर एक पूरा एक बर्ड्स आई व्यू रखें भारतीय चुनाव को, जो कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूसिव बनाने के लिए बहुत प्रयास चल रहा है, उसमें ट्रांसजेंडर एक बहुत बड़ा मिसाल है कि क्योंकि हमारे समाज में बहुत दिनों से स्टिग्मा रहा है, इनका रोल को लेके समाज में स्थान लेके प्रश्न रहे हैं और इनका भी संघर्ष रहा है, पब्लिक पॉलिसी का ओरिएंटेशन रहा है, कोर्ट्स की जजमेंट रहा है। उसके साथ इलेक्शन कमीशन अपना पक्ष जोड़ा है और अपना पक्ष जो है यह है ट्रांसजेंडर की सपक्ष में जुड़ा है और यहां तक बात आके पहुंच गया। 48,000 कोई छोटा नंबर नहीं है और उनकी कैंडिडेचर, उनकी जो नॉमिनी करना है कैंडिडेट, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप उसके साथ अगर सारे चीज़ों को मिला के देखेंगे, जैसे कि पीपल विथ डिजेबिलिटी, इवन एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि एक वुमेन का पार्टिसिपेशन जो बहुत पीछे था कई जनों में, अभी तो काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। खाली इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन में नहीं है, टर्नआउट में आप देखिए 2019 के चुनाव में वो आगे बढ़कर चले गए। और इसीलिए देखिए वुमेन के लिए पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बन रहा है, मैनिफेस्टो में वुमेन का स्थान बढ़ रहा है। वुमेन रिजर्वेशन बिल इसी का एक नतीजा है, मैं मानता हूं। एब्सोल्युटली। और ऐसे ही ट्रांसजेंडर का जब तक उनका भागीदारी बढ़ता रहेगा, उनका भी दावा, उनका एजेंडा आगे बढ़ेगा और एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट होगा। और अब हम बात करेंगे राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है नागौर, और नागौर की सीट का लेखा जोखा हमें बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी। आजादी के बाद से ही इस सीट पर मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। यहां से नाथूराम मिर्धा 6 बार सांसद चुने गए।
1997 में उनका देहांत होने के बाद भाजपा ने पहली बार उनके ही बेटे भानु प्रकाश मिर्धा को कांग्रेस के रामनिवास मिर्धा के सामने उतारकर नागौर सीट पर खाता खोला था। 2009 के चुनाव में नाथुराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में इस सीट से भाजपा के CR चौधरी चुनाव जीते। 2019 में भाजपा ने यह सीट अपने गठबंधन सहयोगी RLP के लिए छोड़ दी। RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को शिकस्त दी। इस बार भाजपा, RLP, बसपा सहित कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला पिछले चुनाव की तरह इस बार भी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच है, लेकिन समीकरण अब पूरी तरह बदल गए हैं। श्री बेनीवाल की RLP पार्टी का गठबंधन इस बार भाजपा की जगह कांग्रेस के साथ हुआ है। वहीं ज्योति मिर्धा कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर पार्टी की प्रत्याशी बन गई। देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी और गठबंधन बदलकर आए पुराने प्रतिद्वंदियों में से जनता किसे चुनती है। जी, अक्षय राव जी, पार्टी बदल कर आए हैं और ज्योति मिर्धा अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। कुल मिलाकर के देखें तो बहुत कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है यहाँ पर। एक क्या मुद्दे आप वहाँ पर नागौर में देखते हैं? एक पेयजल संकट भी एक समस्या रही है वहाँ पर। हाँ, देखिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है और इंडिया के कोने कोने में सारे समस्याएं जो है अलग अलग तरह की हैं। मैं तो यहाँ तक कभी कभी बात करता हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दा हैं, जिसको कि हम लोग एलीट वगैरह डिस्कशन करते हैं, वो शायद लोगों के मुद्दा है नहीं। आप जिसके बारे में बड़े बड़े चर्चाएं होती हैं, पेपर में एडिटोरियल निकलते हैं, आप लोगों के पास चले जाएंगे तो उनको पता ही नहीं होता है कि ये मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा, जो संवेदनशील नेता है वो हमेशा जानता है कि लोगों की मुद्दा क्या है जी। तो उसमें से एक तो बिजली पानी सड़क बताया ही जाता है, और कुछ कुछ सरकार की बहुत बड़ा प्रोग्राम्स भी रहे हैं जिसके जरिए जैसे कि ये सारे चीज़ों का निराकरण होता है। लेकिन राजस्थान का हम लोग जानते हैं, और नागौर के एरिया का आपने जिक्र किया, वो सारे जनरली पानी का शॉर्टेज रहता है। वो पानी के बारे में अगर वो एक चुनाव का मुद्दा बनता है तो ये स्वाभाविक है। अब देखिए, कुछ मैं 1 मिनट समय लेकर आपको बता दूंगा। जैसे कि मान लो बेंगलोर में ट्रैफिक का कंजेशन हुआ, दिल्ली में पोल्यूशन का हुआ, और अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया। मुझे लग रहा है कि कब पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो में ये सब चीज़ कब आएगा। ये जो ज़्यादा मुद्दा हैं, ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आइदर कुछ लोगों का फ्रीबीज की टाइप का कुछ आ जाता है, जैसे कि लोगों को आज की तारीख में जो लुभाए उनके पॉकेट में कुछ जाए, या फिर कोई कुछ चीज आता है जो कि लोग उसके साथ जुड़ भी नहीं पाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्टो को, पॉलिटिकल पार्टीज को देखने का एक बहुत बारीकी से देखने का समय आ गया है। You're right. In fact, it's, I think, time for green manifestos, which the parties have to look forward to. Now we move from Rajasthan to neighboring Madhya Pradesh, Khajuraho. A report by our correspondent Sanjeev Sharma. Khajuraho Lok Sabha constituency has a special identity for its temples of historical and archaeological importance. The diamonds from the Panna district have changed the fortunes of many people. The situation is similar in politics also. Khajuraho parliamentary seat has become one of the safest seats for the BJP in the state since the last few elections. Khajuraho parliamentary seat consists of 8 assembly constituencies. The total number of voters is around 19,94,000. Of these, there are 10,45,000 male and 9,48,000 female voters, while the number of third gender voters is 33. BJP has once again fielded State President V.D. Sharma from this seat. Mr. Sharma had won the last Lok Sabha election by a margin of around 5 lakh votes. The Congress had left the Khajuraho Lok Sabha seat for the Ali Samajwadi Party, but due to the rejection of nominations of SP candidate Meera Yadav, a walkover-like situation has been created for the BJP. We don't have the line through to our correspondent. And speaking of Khajuraho, what is interesting, Mr. Raut, is that Vishnu Dutt Sharma, the BJP state president, is going to fight against the Indian National Congress Party's state president, who was installed recently post the December 2023 assembly elections, Jeetu Patwari. And as our friend from Khajuraho, Sanjeev Sharma, informed us, BJP, this has been a stronghold, this seat of Khajuraho has been a stronghold of the BJP, and last time the BJP candidate Vishnu Dutt Sharma won
by more than 5 lakh votes. Your comments on this? Well, I think on the type of political contests and candidates and various winning margins and defeat margins, I would not like to comment much, because I would like to only focus my comments on the election management and the election process. But it is true that the election result finally is a multiple of various factors. One is the candidate, one is the party, and one is the level of the campaign as well. So often it is said, are you voting for the candidate or voting for the party? Parties have their ideologies, which people know to some extent. They know it more through manifestos. But candidates have their own charm. Right. Have own charm and own influence in the areas concerned. So these two are factors. And the biggest and the immediate factor is the nature of the campaign. Right. Who is able to move campaign, touch people, interactions, and some of the campaigns which are regulated by the Election Commission of India. So all these are multiple. They produce what is called a result, either victory or defeat. और अब लेखा जोखा बिहार की औरंगाबाद सीट का 6 विधानसभा क्षेत्रों में से औरंगाबाद को छोड़कर इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गुरुआ, टेकारी, रफीगंज, कुटुम्बा और इमामगंज नक्सल प्रभावित हैं। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जो रिकॉर्ड 8वीं बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने सीट शेयरिंग समझौते में कांग्रेस की यह पुरानी सीट अपने खाते में शामिल करते हुए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। श्री कुशवाहा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होने की संभावना है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखे तो इस संसदीय क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का कब्जा है। वहीं एनडीए के घटक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास इमामगंज और टेकारी की सीटें हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच रख रही है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस क्षेत्र में बेरोजगारी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विकास की कमी के मुद्दे को उठा रहा है। अक्षय राव जी, बिहार की हम बात करें तो मतदान का कम प्रतिशत एक बड़ी चिंता की बात आपको लगती है? बिल्कुल बिल्कुल। जब आजकल हम लोग जैसे 70 पार की बात कर रहे हैं, 70% की, क्योंकि 67% टर्नआउट था। आप अगर देखेंगे भागीदारी का जो इशू है धीरे धीरे सुधरता जा रहा है और 2014 और 2019 में काफ़ी इजाफा हुआ है, 66.4, उसके बाद 67.4। तो इसीलिए इस बार एस्पिरेशनल है, सबको इलेक्शन प्रबंधन खाली नहीं, लोगों को में आशा है कि हम शायद 70% कर लेंगे। लेकिन उसमें अगर कोई उसको रिस्ट्रिक्ट करता है तो 2 स्टेट का मेनली प्रॉब्लम है। एक है बिहार, आपने जैसे ठीक कहा, और एक है यूपी। और बिहार और यूपी में और कई सारे बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ की 45-50% होता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस बार बहुत बड़ा एक लिया है, इनिशिएटिव लिया है। एक उसको TIP या टिप बोलते हैं, टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो इसमें जहां जहां आइडेंटिफाई किया गया है साइंटिफिकली, बिहार की, यूपी की, खास करके बिहार और यूपी और दूसरी जगह में भी, जो 266 आउट ऑफ 543 जहां बहुत ही कम है टर्नआउट, वहां साइंटिफिक तरीके से क्या डिफरेंशिएटेड इंटरवेंशन, ऐसे नहीं कि सारे जगह में आपने एक कपड़ा पहना दिया, वो तो होता नहीं है। तो हर जगह का समस्या अलग है, क्यों वोट नहीं देते हैं उसको जानकर इंटरवीन करना वो किया गया है। मुझे लग रहा है कि बिहार और यूपी जो पीछे रहे हैं इस बार बिकॉज ऑफ दिस इंटरवेंशंस आगे जरूर आएंगे। Right. And now we are joined by our colleague Manas Pratim Sharma from RNU Silchar. Hello Manas, good evening, and please can you tell us the important Lok Sabha seats in Assam such as Tezpur, Jorhat, Dibrugarh and Lakhimpur are scheduled to vote in the first phase. What is the latest update on campaigning by major political parties? Yes. Good evening. All the major political parties are putting their all-out efforts to the voters. But today, Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Union Minister and BJP leader Sarvanand Sonowal, AAP leader RTC, State Congress President Bhupen Bora and Party Congress MP Gaurav Gogoi and BJP leader Manoj Tiwari has also arrived in Assam. So all are doing campaigning for their party candidate. Tomorrow is Eid ul-Fitr, so it obviously is expected that people
maybe engaged in the celebration. After 2 days, we will have Rongali Bihu in Assam. We all know. So we can expect after the celebration of Rongali Bihu on 16th and 17th, just before the end of the deadline for the first phase of poll, it is likely to gear up. And on 17th, the Prime Minister Narendra Modi and Congress MP Rahul Gandhi they are likely to arrive in Assam and campaigning for their respective party candidates in the state. As of now, with music, with rallies, with road shows, it's a very colorful sort of things going on, mostly in Upper Assam areas you have just mentioned. So, and after the Rongali Bihu, it will get further momentum. Back to you. Right. Manas, thank you very much for that update. और अब पोर्ट ब्लेयर से हमारे संवाददाता राकेश चंद्र लाल फोन लाइन पर हैं। राकेश, अंडमान निकोबार में लोकसभा चुनाव को लेकर आपके पास क्या विशेष जानकारी है और एकमात्र सीट है वहां पर, कौन से प्रमुख उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में रह गए हैं? देखिए, चुनाव के लिए हालांकि मात्र एक सीट है, लेकिन जो प्रमुख मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच ही है। और इस बार के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बार के पूर्व सांसद विष्णुभद्र रे को टिकट दिया है, तो वही वर्तमान सांसद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कुलदीप राय शर्मा, उनको चुनाव में उतारा है। हालांकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके जैसे दल भी है चुनाव मैदान पर, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो कुछ हद तक चुनाव में कुछ असर डाल सकते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला यही 2 उम्मीदवारों के बीच में है। और दीपों की एक सीट की महत्व को ध्यान में रखते हुए जो है कल जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वे कल पोर्ट ब्लेयर आ रहे हैं और एक चुनावी सभा को वो संबोधित भी करेंगे। और यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, जगह जगह नाकेबंदी की गई है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि कल लिटिल अंडमान एक क्षेत्र है और वहां पर जो है 1 किलो से अधिक घातक नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। राकेश, इस जानकारी के लिए इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय की कमी है जी। And Rautji, how difficult is it to conduct elections in northeast and the islands because of the terrain, because of the climate, because of the accessibility also to some parts of these areas? It can be really challenging, and that is why, because Election Commission of India for the last 73 years has been managing this, it is called the gold standard of elections internationally. Just believe me, there are places in northeast where people have to, your polling officers have to travel over the hills for many kilometers and just for few votes. And there are riverines, there are only places which are connected by river. So all types of transport, starting from elephants, boats and to jets and all, everything is moved into position to make sure that polling stations are given in the most interior areas. And now our correspondent was talking about the festivities of Rongali Bihu. That is one side, but the other side is plenty of international borders. In some states there is a drugs problem. Some type of extremist violence is expected at some places. So there are many issues in this northeast which constitutes many small states, and it's not easy. But Election Commission, you also talked about Port Blair. So far up places, but Election Commission manages to get its staff, the machine, the security and the trust to get poll conducted. That is why Indian elections are always wonderful. Absolutely, and you did mention the gold standard of India's elections, and India will keep this flag flying high. Akshay Rautji, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much indeed. Thank you very much. श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं।